Assalamu alaikum students. Today we will study about endocrine system. Endocrine system is very important in controlling different activities such as growth, reproduction, maintenance of glucose concentration in blood and reabsorption of water in kidneys. Endocrine system बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, हमारी बॉडीज़ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जांपल ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को. फॉर एग्जांपल ये जो सिस्टम है इट परफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स. ये डिफरेंट केमिकल्स की हेल्प से परफॉर्म करता है. दीज केमिकल्स आर आल्सो कॉल्ड एज हार्मोन्स. So these hormone is a specific messenger molecule which is synthesized by hormones are synthesized by different endocrine glands. These glands are ductless glands and they release their secretion directly into the blood stream. ये जो hormones होते हैं ये directly into the blood produce होते हैं and the blood carries these hormones to different target tissues upon which they act. So endocrine system is a system of different hormones and these hormones are synthesized by endocrine glands and these glands are ductless glands. ये glands जो होते हैं ductless होते हैं and they release their secretion directly into the blood. Now we will study different endocrine glands one by one. First endocrine gland is pituitary gland. Pituitary gland is very important. It is a P-shaped gland. ये बेसिकली पी शेप्ड ग्लैंड होता है. इट इज़ अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया था. हाइपोथैलेमस इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. मैंने आपको बताया था कि ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. और फोर ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं विच इज़ थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम. तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इट इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड विच इज़ अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन. नो दिस ग्लैंड इट्स is responsible for different secretions and there are basically two lobes of pituitary gland. Pituitary gland की basically two lobes होती हैं. एक को हम anterior lobe कहते हैं. Other one is also called as posterior lobe. So anterior lobe is produces many hormones. इनमें से ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है. इनमें से एक हार्मोन है सोमैटोट्रोफिन. सोमैटोट्रोफिन हार्मोन. और दूसरा ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन रिप्रेजेंटेड बाय TSH. Posterior lobe also secretes two hormones. Posterior lobe भी two hormones produce करती है. एक को हम कहते हैं vasopressin while other is also called as oxytocin. This is very important to memorize the names of these hormones. Now first of all we will study the anterior lobe which secrete a hormone which is known as somatotropin. Somatotropin promotes the growth of the body. If the production of this hormone is diminished during growing age, for example अगर ये हार्मोन growing age जब चिल्ड्रन की होती है उसमें ये प्रोड्यूस ना हो, then rate of growth decreases. तो इस कंडीशन में जो कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है उसको कहते हैं डिवार्फिज्म. डिवार्फिज्म का मतलब होता है यानी हाइट बहुत छोटी रह जाती है. अगर फॉर एग्जांपल ग्रोइंग एज के अंदर ये वाला हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो, एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो, it leads to gigantism. Gigantism means के height very tall and overweight. Person becomes very tall and overweight. और एक और तीसरी कंडीशन होती है अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन आफ्टर ग्रोइंग एज ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो इस कंडीशन में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं. उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमीगैली. एक्रोमीगैली इज़ अ कंडीशन. Acromegaly is very important condition. Acromegaly is a condition in which if this hormone is produced in excessive amount after the growing age, then internal organs becomes large. Such persons have large hands, feet and jawbones.
सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। और मैंने आपको बताया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स की 2 लोब्स होती हैं, एक एंटीरियर लोब होती है, दूसरी पोस्टीरियर लोब होती है। एंटीरियर लोब जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, वन ऑफ द हार्मोन इज सोमेटोट्रोपिन। इफ़ दिस हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट इन द ग्रोइंग एज, द कंडीशन इज़ डिवार्फिज्म। अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो तो गिगैंटिज्म। और अगर आफ्टर ग्रोइंग एज ये हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इट लीड्स टू एक्रोमीगैली। So another hormone produced by the anterior lobe of pituitary gland is thyroid stimulating hormone. It is represented by TSH. This hormone influences the reproductive organs and also controls the adrenal gland. It is responsible for controlling of adrenal gland present in kidneys. And it also control different reproductive organs. Posterior lobe जो होता है ना, it also secrete 2 hormone. One is vasopressin, other is oxytocin. Vasopressin is very important. It increases the rate of absorption of water. It increases the rate of absorption of water. ये absorption of water को basically control करता है. For example, if we have less amount of water in our body fluid, then this hormone will produce. अगर हमारी बॉडी के अंदर लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड secrete vasopressin, more absorption will takes place and less amount of urine will produce in this case. अगर फॉर एग्जांपल बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो लेस vasopressin will not produce. there is decline in the production of this hormone, यानी इस हार्मोन की प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, लेस एब्जॉर्प्शन होती है और मोर यूरिन प्रोड्यूस होती है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, जब यूरिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए। एक दूसरा हार्मोन ये पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूस करती है, इसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये फीमेल्स के अंदर डिफरेंट चेंजेस को कंट्रोल करता है। सो फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इन मदर्स, दिस हार्मोन कंट्रोल्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इन मदर्स. So endocrine system is a system of different hormones, and these hormones are ductless. They release their secretion directly into the bloodstream. और मैंने आपको बताया है कि pituitary gland is very very important. It is a P-shaped gland attached to the hypothalamus of the brain. और इसकी 2 lobes होती हैं जो different hormones produce करती हैं. This is very important to memorize the names of all these hormones and their secretions and their effects.